Hello friends, welcome everyone. Samastanku Swagat. Welcome to this fantastic session. My dear friends, welcome to Exploring Goals, our YouTube channel. जो मैंने भी चैनल रे अच्छा नुआ निश्चित रूपे चैनल को सब्सक्राइब करिनी और बेल आइकन हिट करी ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दियो सब लाइव अपलोडेड वीडियोज पाई तो आज पार्ट 13 ऑफ 1000 सीरीज एमसीक्यूज बहुत तमन को भितर जो मैंने नुआ अच्छा निश्चित रूपे सब्सक्राइब करी बेल आइकन हिट करी ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दियो लाइव अपलोडेड वीडियोज पाई गुड इवनिंग एवरीवन गुड इवनिंग माय डियर फ्रेंड्स स्वागत समस्त को गुड इवनिंग हाँ बहुत बढ़िया अच्छे मो तमने केमती अच्छो कुह ओके सो लेट अस बिगिन दिस इंपोर्टेंट सेशन समस्त रेडी स्टार्ट करिबा ओके सो टीचिंग एप्टीट्यूड एंड सीडीपी रॉ ये 10 टॉप 10,000 एमसीक्यूज रो सीरीज लेट्स स्टार्ट दिस इंपोर्टेंट वन फ्रेंड्स फर्स्ट क्वेश्चन 301 रो आज स्टार्ट तो 300 सॉरी जाई 301 which theory of learning emphasize on making the student active for discovery of knowledge in place of becoming a passive listener only passive listener न करिकी डिस्कवरी करिवा पाई नॉलेज को डिस्कवर करिवा पाई इंपोर्टेंस दिए को थ्योरी ऑफ लर्निंग क्वेश्चन नंबर 301 व्हाट इज द राइट आंसर यस बहुत बढ़िया पार्टिसिपेशन समस्त को धन्यवाद जॉइन करथिवारु वेलकम वंस अगेन ओके सो फ्रेंड्स एटी कौन हम हाँ बढ़िया तो बहुत बढ़िया कल स्टार्टिंग रे पूरा आग लगा वाला परफॉर्मेंस वेरी वेल डन कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी तो स्टूडेंट माने डिस्कवर करिवे नॉलेज को बा कंस्ट्रक्ट करिवे नॉलेज को निजे तैयारी करिवे से माने पैसिव लिसनर के बारे सुनिबे नहीं चुपचाप बसिकी से माने एक्टिवली एक्सप्लोर करिवे तो कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी वेरी गुड डी इज द राइट आंसर डी सहित तो मार्क मिल गला 302 लेक्चर मेथड ऑफ टीचिंग इज वाह सकाळु सकाळु आज माने स्टार्ट रू रसगुल्ला वाला क्वेश्चन आसी करो फटाफट लेक्चर मेथड ऑफ टीचिंग इज लेक्चर मेथड ऑफ टीचिंग इज यस इजी वन वेल डन थैंक यू एवरीवन फॉर योर एक्टिव पार्टिसिपेशन एठी लेक्चर मेथड जेतेबेले कहा जाए ओल्ड ट्रेडिशनल चॉक एंड टॉक मेथड इनफॉर्मेटिव मेथड टीचर सेंट्रिक मेथड ऑटोक्रेटिक मेथड बोली कहा जाए सो ए इज द राइट आंसर 303 चाइल्ड बिलोंगिंग टू वीकर सेक्शन मीन्स वीकर सेक्शन को बिलोंग करुची व्हाट डज इट मीन्स yes child belonging to weaker section a child belonging to such parents whose annual income is low a child belonging to such parents who come under disadvantaged a child belonging to such parents who come under the category of below poverty line a child belonging to such parents whose annual income is lower than the minimum limit specified by appropriate government तो ऑप्शन डी सहित अच्छे तो मार्क मिल appropriate government द्वारा डिसाइड करा जाइथिबा लिमिट रु भी कम जो चाइल्ड रो पेरेंट्स मानकर इनकम सो डी इज राइट तो सही चाइल्ड को हमें कहवा वीकर सेक्शन चाइल्ड बिलोंग्स टू वीकर सेक्शन 304 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज मोर इंपोर्टेंट फॉर कीपिंग द गुड मेंटल हेल्थ ऑफ स्टूडेंट स्टूडेंट रो गुड मेंटल हेल्थ पाई कोटा इंपोर्टेंट व्हिच इज इंपोर्टेंट फॉर गुड हेल्थ ऑफ स्टूडेंट yes more important for keeping the good mental health provision for curricular activities freedom of expression variety of interest teachers role and school environment which is more important तो ये झटका दे दबो क्वेश्चन कहीं ना फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन बढ़िया इंपोर्टेंट जिनस वेराइटी ऑफ इंटरेस्ट भी इंपोर्टेंट एंड टीचर्स रोल एंड स्कूल एनवायरनमेंट भी इंपोर्टेंट बट जितेबाला सबू टुगेदर अच्छा से इंपोर्टान्स क्या अधिका देवा क्वेश्चन को ये बुझा फास्ट मोर इंपोर्टाट
for keeping the good mental health of student रो mental health बा mind को good रखिबा healthy रखिबारे सबुठु important role किए play करे teachers role and school environment. D right answer friends. Teachers role and school environment एटी जो variety of interest अच्छी interest को importance दबा school environment. ये जो freedom of expression अच्छी expression को freedom दबा express करिवा पई school environment. The school environment under ए सब अच्छी जेतबे conducive, flexible, suitable, productive environment congenial हे जाए सेतबे important role play करे and teachers मानकर role भी important. 305 The Right to Education Act 2009 specifies that if the number of children admitted for first class to fifth class is 5 above 200. अच्छा in देखो तो कही फर्स्ट क्लास अप टू फिफ्थ क्लास माने 1 रु 5 भितरे थिबा छुआंक संख्या above 200 रु अधिका then the pupil teacher ratio required. The pupil teacher ratio केते हबा उचित कौन बोला राइट आंसर pupil teacher ratio केते हबा उचित हाँ द प्राइमरी क्लासेस कही तो मन रखियो फ्रेंड्स ये राइट आंसर होची 40 माने एक टीचर वन टीचर फॉर एवरी 40 स्टूडेंट्स बा 40 स्टूडेंट्स पाई वन टीचर तो जेतबेला हमें पुपिल टीचर रेशियो कहूचे पुपिल केते 40 एंड टीचर केते 1 फॉर एवरी 40 स्टूडेंट्स देयर शुड बी वन टीचर. 306 Which of the following statement is incorrect about action research? Action research सहित related को statement incorrect अछि. Incorrect कही छी फ्रेंड. Incorrect. तो action research सब बड़े current problem को solve करिवारे help करे. It is conducted by teachers and educational professionals. It is conducted to solve specific problem. It is conducted to provide information for decision making at a broader level. It is conducted to focus on the solution of day-to-day problem at local level. ये तो निहाती. Conducted to solve specific problem भी होगा. Conducted by teacher and educational professional भी होगा. तो incorrect वा false कोटा. It is conducted to provide information for decision making at broader level. C is incorrect. Related to action research. Action research सहित related. Option C incorrect. D no. It is conducted to focus on solutions of day-to-day problem. The action research तो current problem जहाँ भी local level रे जहाँ भी problem आसे ताको solve करिवा पाए हमें करूचे. So the right answer C होगा friends. 307. The temporary change in behavior due to continuous exposure to stimuli is called. कंटिन्यूअस गोटे सिचुएशन को एक्सप्लोर बा एक्सपोज हवा द्वारा बिहेवियर रे जो टेम्पररी चेंज हुए ताको हमें कौन कहूचे कौन अब राइट आंसर हाँ ये इनकरेक्ट ही कही प्रीवियसली इनकरेक्ट अबाउट एक्शन रिसर्च जो इनकरेक्ट अबाउट एक्शन रिसर्च कहूची तो ये ब्रोडर सेंस ब्रोडर लेवल रे यूज करा जाए या लोकल लेवल रे यूज करा जाए मन रखिबो लोकल लेवल पे. 307 टेम्पररी चेंज को हमें कौन कहबा देख एठी भूल करि दउचो मोटिवेशन ता टेम्पररी चेंज देख कंटीन्यूअस एक्सपोजर टू स्टिमुली जेतेबेले होची एटा को मोटिवेशन कहबानी आको टेम्पररी लर्निंग भी कहबानी आको लर्निंग कहबानी लर्निंग द परमानेंट चेंज ऑफ बिहेवियर टेम्पररी चेंज को हमें लर्निंग कहू ने फ्रेंड्स भूल करि दउचो हैबिट हबो हैबिचुएशन हबो ए करेक्ट ये हैबिट रे परिवर्तन हो जाए जेतेबेले कंटीन्यूअसली हमें गोटे स्टिमुलस को एक्सपोजर हेकि रहउचे सेटा हमर टेम्पररी चेंज को हमें हैबिट बोली कहउचे. The meaning of development is what is the meaning of development? Easy question. Meaning of development. The meaning of development is quote a more appropriate definition development progressive series of changes
progressive series of changes as a result of motivation, progressive series of changes as a result of motivation and experience, series of changes as a result of maturation and experience. Development. तो डेवलपमेंट माने तुम माने कहूछ जे मोटिवेशन नहले हबनी की डेवलपमेंट, मोटिवेशन नहले डेवलपमेंट हबनी की हबो. So it is a result of maturation, maturity, biological maturity plus experience or result, maturation and experience. Okay, fix it friends. और जदि तुमको लागुच मोटिवेशन एंड एक्सपीरियंस तो ये भी टिके कंफ्यूजिंग रहउच ऑप्शन सी, बट रिमेंबर ये तुम मान बर्तमान होमवर्क लास्ट सबू सेशन रे गोटे दीटा होमवर्क मु रखुची बिकॉज तुम आउ टिके ताकर आइडियाज कलेक्ट करो एंड कमेंट बॉक्स रे मते जणा, बट एटी डी सहित जिबा मैच्योरेशन एंड एक्सपीरियंस. ओके, सो डी इज द राइट आंसर. 309. Which of the following statement is false in describing a person with a high achievement motivation? High achievement motivation थिबा पर्सन सहित रिलेटेड केउ स्टेटमेंट फॉल्स भूल. तो हाईली मोटिवेटेड जदि अछंती अचीवमेंट हाई अचीवमेंट मोटिवेशन अच्छी, they consistently get better grade from easy chosen courses, they return to incomplete task, they try harder if they do poorly, and they want a challenge but also want to know they can do it. तो एटा भी ठीक अच्छी, तांकर मोटिवेशन अच्छी तो से चेष्टा करते करने चैलेंज वर्क को ग्रहण करती. दे ट्राई हार्डर इफ दे डू पुअरली, जदि पुअर को परफॉर्मेंस हार्डर ट्राई करती. दे रिटर्न टू इनकम्प्लीट टास्क, जोटा इनकम्प्लीट अच्छी ताको भी रिटर्न करती. किंतु एमती आमे कहि परिबान जे से माने कंसिस्टेंटली बेटर ग्रेड पाइबे फ्रॉम इजी चूजन कोर्स. से माने इजी जोटा इजी जिनस सेटा को ही चूज करती. तो जदि हाईली अचीवमेंट मोटिवेशन अच्छी से माने केवल इजी जिनस को चूज करेंगे एवं से बेटर ग्रेड कंसिस्टेंटली देवे, ये तो पूरा नेगेटिव जिनस हो गला. व्हाई यू आर गोइंग विथ बी? तो इनकम्प्लीट टास्क को रिटर्न करवा कौन अचीवमेंट मोटिवेशन नुहे कि कौन खराब जिनस? इजी चूजन कोर्सेस को बाछिबा, कोर्स को बाछिबा जोटा इजी से कोर्स को बाछिबा और से कंसिस्टेंटली बेटर रिजल्ट दबा. एटा गोटे हाई अचीवमेंट मोटिवेशन वाला पर्सन रो कैरेक्टर नुहे. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ पॉजिटिव पनिशमेंट? एग्जांपल ऑफ पॉजिटिव पनिशमेंट. What is the right answer? पॉजिटिव पनिशमेंट रो कथा जते बेले कुआ जाउची, पनिशमेंट देखो रीइंफोर्समेंट आमे जानथिले पॉजिटिव नेगेटिव एंड जीरो रीइंफोर्समेंट बा न्यूट्रल रीइंफोर्समेंट. पनिशमेंट इज नॉट ए रीइंफोर्समेंट एट ऑल, एटा भी जानिछि आमे जे पनिशमेंट रीइंफोर्समेंट रे जाए नै. किंतु एठी पॉजिटिव पनिशमेंट रे कोन हुए किछि लॉस हुए नि, माने लॉस किछि होबनी. व्हाट डज इट मीन? एथरे किछि लॉस होबनी, कोथरे लॉस होउनी. एटी टाइम लॉस हेगला, लॉस ऑफ टाइम हेगला. सीज नैगिंग माने नैगिंग सीज हेगला, तो ये भी नेगेटिव जिनस, राइट. बाकी रहिला फ्रेंड्स माने थट्टा परिहास करिबा, फ्रेंड्स माने मजाक उड़ेइबा. तो मजाक उड़ेले तार लॉस किछि हुए नि, तेणु ए ऑप्शन इज द राइट आंसर, राइट. एंड सीज नैगिंग माने हरासमेंट टा सीज हेगला, माने हरासमेंट टा बंद हेगला. ओके, तो एथरे सीज नैगिंग माने हरासमेंट करिबा, हरास करिबा, ये भी नेगेटिव. तो राइट आंसर हबो एठी ए, मोर अप्रोप्रिएट हबो ए. क्वेश्चन नंबर 311. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग statements is not appropriate to motivation as a process? Not appropriate to motivation as a process. Motivation सहित related नुहे.
नहीं नहीं ये सेल्फ रेस्पेक्ट लॉस हुए ठीक अच्छे रेडिकल मजाक जो उड़ेले फ्रेंड्स माने तो सेल्फ रेस्पेक्ट लॉस है किंतु ता द्वारा गोटे पॉजिटिव मोटिवेशन आसे जे हाँ मु एमती करिवार नथला एमती कले आउ टिके बेटर हो ए टाइप रो करिवि तो ये हमको गोटे डायरेक्शन दिए गोटे शिक्षा दिए व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट अप्रोप्रिएट टू मोटिवेशन एज ए प्रोसेस not appropriate to motivation as a process. It causes a person to move towards a goal ठीक अच्छे it satisfies a person's biological need हाँ है ही पारे it helps in achieving psychological ambition है ही पारे it keeps away from unpleasant situation हबनी एटा हमें आगरो भी करथिले जे मोटिवेटेड अछि माने अनप्लेजेंट सिचुएशन आसीबनी नुह मोटिवेटेड अछि माने अनप्लेजेंट सिचुएशन आसिले ताको ओवरकम करबा पई ता पाखरे पावर थिबो ता पाखरे मोटिवेशन थिबो किंतु आसीबनी कहबाटा भूल मोटिवेटेड अछि माने मु किछि माने खराब परिस्थिति मो लाइफ रे आसीबनी एमते हमें कहि परिबानी अन्ना's husband died अन्ना रो हस्बैंड मरि गले and she continues to seek a place for him and she a dining रे जेतेबेले डाइनिंग टेबल रे जेतेबेले खाइबा को बसे सेतेबेले गोटे जागा ता हस्बैंड पई भी रखी दिए दिस इज एन एग्जांपल ऑफ माने अभ्यास रे पड़ी के अछि जे ता सहित सब बेले ता हस्बैंड बसी खाउतले किंतु हस्बैंड मरि गला परे मध्य तांको पई गोटे चेयर रखी दिए एटा कार एग्जांपल दिस इज एन एग्जांपल ऑफ यस कौन राइट आंसर repression, Daniel problem focused copying and adaptation. कौन अब राइट आंसर देखो फ्रेंड्स एठी राइट आंसर होची डेनियल डेनियल मीन्स व्हाट ट्रूथ को मानिबा को नाराज सत्य को मानिबा को नाराज बुझेला तो अस्वीकार करिवा स्टिल अस्वीकार करूची सत्य को मानुनी okay denying to accept the truth refusing to accept the truth 313 one of right answer this stage of development usually occurs at the age of 1 to 3 years the ego starts to develop and the id is somewhat controlled ego development start हुए 1 ରୁ 3 वर्ष भितरे ताकू सिग्मंड फ्रूड करो को स्टेज ऑफ साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट बोली कहा जाए जोठी स्टार्ट हुए ईगोरो डेवलपमेंट एंड द आईडी इज समव्हाट कंट्रोल आईडी कंट्रोल हो जाए एंड ईगो डेवलपमेंट स्टार्ट हुए इस स्टेज को कौन कहा जाए हाँ रश्मि तुम जोटा कह हैबिट हो जाइए हजबैंड का सहित अडॉप्ट हो जाइए ठीक अच्छे बट अडॉप्टेशन इज डिफरेंट देन डेनियल डेनियल मीन्स अस्वीकार करवा जे वर्तमान पर्यंत से जानी पारुनी वर्तमान पर्यंत से माने ऑटोमेटिकली तो माइंड से अच्छी तार हजबैंड एंड से तांको पई एमती करूची तो डेनियल इज मोर अप्रोप्रिएट 313 द राइट आंसर इज एनाल फ्रेंड्स एनाल ईगो स्टार्ट हुए देखो फ्रेंड्स तो अच्छा ये ओराल भी हाँ ओराल आम करी ना ओराल एनाल भितर तो ओराल रे हमें ईगो डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाइए बोली जोटा एठी हमें डायग्राम रे भी करूचे तो ओराल हबार चांस मैक्सिमम अच्छी एनाल रे प्योरली डेवलप हो जाए ईगो तो एक्चुअली दीटा जाक ओराल आउ एनालटा दीटा जाक बिलोंग करुची ओरालटा आम जो कहवा 0 to 1 year पाखापाखि रोचे एंड ये 1 to 3 year पाखापाखि रोचे तो 1 to 3 year जो मेंशन अच्छी तेणु ओराल न करके आम एनालटा कले मोर अप्रोप्रिएट रहिबो राइट the ego starts to develop and id is somewhat controlled so id control हो जाए ego start हुए तो आम कहि परिबा मोर अप्रोप्रिएट टिके एनाल हबार चांस अछि काहे कि id कंट्रोल होउची ओराल रे id रहउची एनाल रे ईगो आसुची एंड 1 to 3 years जते बेले कहिछि आम एनाल को पळेबा ओके
So it oral अपेक्षा anal is more appropriate, so anal हब right answer. Okay, so एठी जोटा लिखा है जा ऊपर मु रही जाई लिखा है ego develops. Okay, चलो ठीक अछि. तो anal एठी more appropriate हब. एज जेहेतु देज 1 to 3. बाकी देखो तापर phallic आसिला जोटी कि super ego develop हुए. Phallic रे super ego starts to develop and then latent and genital. There are 5 different stages of psychosexual analysis by Sigmund Freud. 314, which of the following indicates nature of learning? Indicates nature of learning. What is the right answer? Learning is not based on maturation. Maturation सहित connected निश्चित. Learning maladjustment does not promote. Maladjustment को promote करे नहीं, माने adjustment को promote करे, maladjustment को promote करे नहीं, ठीक है. Learning is not a passive process. Yes, means active process, ठीक है. Learning is not related to goals, ये बोले. तो B और C जो उठी right अच्छी, तो आंसर कौन है जो एठी? C is the right answer. C is the right answer because B और C only. माने learning maladjustment does not promotes, correct. Learning is not a passive process, correct. Very good, बहुत बढ़िया. 315. What is the definition of cognition? What is the definition of cognition? Cognition. Cognition is related to mind and structural, physiological changes को हमें कहिबानी. ये तो maturation सहित related हबो. Developing attitude and interest याकू भी हमर cognition कहिबानी. Process of biological and psychological change भी नुआ. ये होची option A, that is the process of acquiring and understanding knowledge through our thoughts, experience and sense. तो knowledge को acquire करिबा को हमें cognition कहउचे through our thoughts, experience and senses. 316. What are the major characteristics and developmental changes that are found occur in the child in the age of 2 to 7 years? तो 2 to 7 years टा पियाजेंकर प्री ऑपरेशनल स्टेज को इंडिकेट करूँ. तो प्री ऑपरेशनल स्टेज ऑफ डेवलपमेंट रे चाइल्ड रो कौन कौन चेंजेस हुए, मेजर कैरेक्टर कौन देखा जाए? देखो जो प्री ऑपरेशनल स्टेज कथा कहूची से कोटा मोर अप्रोप्रिएट हम. यस, children begin to think symbolically and use words and pictures to represent the object. So this is the more appropriate one. Okay, and abstract तो तमन जान तो abstract thought टा केबे आसीबो? formal operational stage रे. Okay, चलो. and basic actions, shocking, grasping, ये आसीबो हमरा sensory motor. चलो, let's move on. 317. What is the meaning of following expression? Learning is product of environment. What is the meaning of learning is product of environment? Thank you everyone for joining and hope कि समस्ते वीडियो को लाइक निश्चित करना. Do like everyone. Question number 317. Learning is product of environment. Learning through the modification and remodification by the objects and individuals in the environment. Learning is modification of behavior. Learning is the process that happens through both physical and development
physical and development of learners. Learning is process that happens through experience, which is more appropriate. And learning is product of environment. ଯେତେବେଳେ କହିଛେ ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହବ? Modification and remodification of the objects and individuals in the environment. A is the right answer. Friends, channel रे जो माने भी नुआ अछ चैनल को निश्चित रूप से सब्सक्राइब करी, बेल आइकन हिट करी, ऑल नोटिफिकेशन ऑन करो, सब लाइव एंड अपलोडेड वीडियोज पाइबा पाई. वीडियो को वर्तमान पर्यंत जदि लाइक करन टिके मते एनकरेज करबा पाई लाइक करनियो एंड फ्रेंड्स मान सहित शेयर भी करदब. आ सहित सबुदिन 5टा रे जो 1000 सीरीज रो सेशन मु स्टार्ट करछि, जॉइन करबा को चेष्टा करो एंड कमेंट करके जणेबो जे केमती रहला सेशन, हाउ मच हेल्पफुल इट इज फॉर योर अपकमिंग एंट्रेंस. Question number 318. What does development imply? Development कहले कौन? Thank you for your likes, everyone. Thank you. What does development imply? देखो ये क्वांटिटेटिव तो हबनी, कारण ये तो ग्रोथ हो गला, इंक्रीज इन हाइट वेट ये सब ग्रोथ हो गला. बाकी रहा दीटा अनफोल्डिंग ऑफ इंडिविजुअल्स इनहेरेंट ट्रेट, क्वालिटेटिव चेंज. तो डेवलपमेंट माने होची केवल अनफोल्डिंग कहीदेले आम हबनी, अनफोल्डिंग केवल कहीदेले हबनी इनहेरिटेड ट्रेट को. डेवलपमेंट ये तो केवल पेरेंट्स को पाखरु आसला ना, एंड पेरेंट्स को पाखरु जहाँ आसला केवल ताहा ही डेवलपमेंट कहवा ठीक नुह. तो बाकी रहीगला ऑप्शन बी व्हिच इज क्वालिटेटिव चेंज. तो इंडिविजुअल इनहेरेंट ट्रेट टा अनफोल्ड होगी. इनहेरेंट ट्रेट माने जीन को बुझेला, पेरेंट्स टू आसथिबा कैरेक्टर रो अनफोल्डिंग हे गला बा देखा देला, ताकू ही हमें डेवलपमेंट कहबानी. डेवलपमेंट रे अधिका किछि मध्य हमें रहिछि जोटा हमर क्वालिटेटिव चेंजेस आने. तो बी राइट आंसर. यदि बहुत क्वालिटी एंड क्वांटिटी थांता हेई थांता किछि असुविधा नहीं, बट आज पर द ऑप्शंस बी इज करेक्ट. 319 व्हिच साइकोलॉजिस्ट गेव द 3 डोमेन्स ऑफ लर्निंग? 3 डोमेन्स ऑफ लर्निंग के देखिए, 3टा डोमेन कौन कौन एंड आंसर दियो. फर्स्ट आंसर दियो, तापर डोमेन्स कहबो. फर्स्ट आंसर दियो देन डोमेन्स को. यस फ्रेंड्स, हाँ डेवलपमेंट इज, हाँ ये रश्मि जहाँ कहूँ हेरिडिटी और एनवायरनमेंट रो इंटरलिंक रे हमर डेवलपमेंट हुए. बट इट राइट आंसर, वेरी गुड बेंजामिन ब्लूम. एंड जो 3टा डोमेन कथा कही कौन कौन? कॉग्निटिव, तापरे अफेक्टिव एंड साइकोमोटर. Cognitive related to mind, cognition, knowledge, understanding, problem solving, thinking, reasoning, memory. Affective domain related to behavior, how you interact, behavior manner. Psychomotor is related to muscular coordination, activities, learning by doing. That's it. Question number 320. One of the factors that influence how children learn and grow is assimilation, which means what is assimilation? Assimilation गोटे फैक्टर जहाँ की इन्फ्लुएंस करे चिल्ड्रन मानकर लर्निंग एंड ग्रोथ को. व्हाट डू यू मीन बाय assimilation? जहाँ पियाजे देइथिले 4 इंपोर्टेंट वर्ड्स: स्कीमा, assimilation, accommodation and equilibration. assimilation पचारिछि. देखो फ्रेंड्स, गोटे जिनस मु कहि दउछि जोटा मैक्सिमम भूल करिलो मु देखुछि. हाँ ठीक ठीक, बहुत हाँ, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड. हाँ हाँ, तो 50-50 जाउछि ए आउ डी भितर, ए आउ डी भितर 50-50 जाउछि. अरे फ्रेंड्स, अरे गधिया दल, मॉडिफाइंग जोठी अछि सेटा मु कहिछि अकोमोडेशन. अकोमोडेशन मॉडिफाई करे, assimilation taking in new information into already existing schema. existing schema भितर को नुआ इंफॉर्मेशन को नबार प्रोसेस को आमे कहूचे कौन? नुआ इंफॉर्मेशन को नबार प्रोसेस को आमे कहूचे assimilation. तो राइट आंसर एटी ए हबो, डी होची accommodation. ओके, schema means
थिला जो नॉलेज हमर प्रीवियसली थिला असिमिलेशन मीन्स आसिला न्यू इनफॉरमेशन आसिला अकोमोडेशन मीन्स मिसिला मॉडिफाई कला and equilibration means hela balance he gala 321 how do we have cultural diversity how do we have cultural diversity yes बहुत बढ़िया फ्रेंड्स बहुत बढ़िया how do we have cultural diversity कौन होगा यार राइट आंसर कल्चरल डाइवर्सिटी पछर कारण कौन बाय वेरिंग बैकग्राउंड रेस्पॉन्ड and develop themselves differently by behaving differently due to educational difference. It is the result of geographical location, religious beliefs and lifestyle. तो हाँ समस्त तो मारी सारे तो डेरी करवानी सी राइट आंसर ही हम ये हूँ कल्चरल डाइवर्सिटी जहाँ की विभिन्न जगार विभिन्न लोकेशन जियोग्राफिकल लोकेशन रिलीजियस बिलीफ्स और लाइफस्टाइल अनुसार हमको मिले इकोनॉमिक सहित यार कनेक्शन ना व्हाट इज मैच्यूरेशन व्हाट इज मैच्यूरेशन क्वेश्चन नंबर 322 एठी आसीबो फ्रेंड्स से जते बेले छाडी देइतलो डेवलपमेंट रे जहाँ को भूली जाइतलो मैच्यूरेशन रे से आसीबो मैच्यूरिटी आसे केमिति एक्सरसाइज रो इफोर्ट नुहे लर्निंग सहित रिलेटेड नहीं केवल बायोलॉजिकल जेनेटिकल कहिबा ठीक हबनी इट इज मोर अप्रोप्रिएट अनफोल्डिंग ऑफ इंडिविजुअल्स इनहेरेंट ट्रेट्स पेरेंट पाखरु आसीबा जिन द कैरेक्टर जते बेले अनफोल्ड हो जाए सेते बेले ताको हम मैच्यूरेशन बोली कहउचे बा मैच्योर हैला बोली कहउचे 323 what do you mean by secondary socialization what do you mean by secondary socialization it refers to growing child who learns very important lessons in social conduct from his peers. It refers to process of discarding former behavior pattern and accepting new ones as part of transition in one's life. ना रे ना transition हिसाब रे हबनी माने ये secondary socialization में second प्रथमे प्राइमरी को देखो प्राइमरी होची फैमिली रो जोटा मिले तो सेकेंडरी सोशलाइजेशन काठू मिलिबो फ्रेंड्स मानन को टुरे ए राइट आंसर हबो ओके इंपोर्टेंट लेसन इन सोशल कंडक्ट फ्रॉम हिज फ्रेंड्स बा पीयर्स ओके इट रिफर्स टू सोशलाइजेशन ऑफ इन्फेंट इन प्राइमरी और अर्ली लाइफ भी हबनी इट रिफर्स टू प्रोसेस बाय व्हिच मैन लर्न कल्चर ऑफ ए ग्रुप with anticipation of the joining the group no so it right answer होची ए 323 right answer A habo it refers to growing child who learns very important lesson in social conduct from his peers the secondary socialization आकु हमें कहते primary जते बेले एई जिंस नुवा जिंस से सिखुचे from family and neighbor family and neighbor रु हेले primary and peers बा friends मानन को हेले secondary what is child rearing also called बहुत इजी क्वेश्चन आराम से कर दो देखो एबे टिके रिलैक्स हे जिवो ए क्वेश्चन तमन को रिलैक्स कर दो चिंता करनी आ दुईटा क्वेश्चन रहला एंड इट विल रिलैक्स यू व्हाट इज चाइल्ड रियरिंग कॉल्ड डी कौन पाई हेलानी देखो इट रिफर्स टू द प्रोसेस बाय व्हिच मैन लर्न द कल्चर ऑफ ग्रुप विथ द एंटिसिपेशन ऑफ जॉइनिंग द ग्रुप द ग्रुप को जॉइन कला बोली ग्रुप रे मिसिबा जो कल्चर को मैन लर्न कला ताको हमें सेकेंडरी कहबानी तो ये तो गोटे प्रोसेस ये लाइफ टाइम चलिबो तो प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी क्वाटरनरी जदि हमें करि चलिबा हबनी तो प्राइमरी हमें जानिचे सब बळे फैमिली रु सेकेंडरी जानिचे पीयर्स एंड स्कूल रु सेकेंडरी डेवलपमेंट बा सेकेंडरी सोशलाइजेशन तारो स्कूल रे हुए छुआरो प्राइमरी टा फैमिली रे हुए मींस पेरेंट्स आउ नाइबरहुड्स को टू एंड सेकेंडरी स्कूल पीयर्स एंड इट बहुत इजी क्वेश्चन काई एडोलेसेंस मारुच चाइल्ड रियरिंग रियर करबा माने कोन पालन करबा एडोलेसेंस कोन हला कोन कनेक्शन तो मु किछि बुझी पारुनी किछि कनेक्शन नाही
parenting parenting लालन पालन करिबा nurture okay child rearing 325 what do you understand by school culture कहले कोन बुझितो what do you understand by school culture friends हाँ बहुत बढ़िया पार्टिसिपेशन बहुत बढ़िया समझते कीप गोइंग रियरिंग टा बुझियला तो हाँ सेते बुझियलानी से भूल कल व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय स्कूल कल्चर कहले कोन it refers to the belief perception relation attitude and written and unwritten rules it refers to social competencies and skills it refers to resources and information that help students to be a social competent it refers to interaction with peers in the school the peers in the school से interaction को हमें secondary learning कहले बा socialization कहले एठी आंसर हम ए बिकॉज स्कूल कल्चर हमको सिखाए स्कूल रो किछि बिलीफ्स थाए विश्वास परसेप्शन किछि अंडरस्टैंडिंग किछि नॉलेज हमें डेवलप करू रिलेशनशिप बिल्ड करू समस्त सहित हमरो एटीट्यूड रो विकास हुए फॉलोइंग सम रिटन एंड अनरिटन रूल्स सो दिस इज आवर स्कूल कल्चर फ्रेंड्स समस्त निश्चित लाइक कमेंट एंड शेयर करी मत जणैबो लाइक करबा को भूलिबनी बिकॉज योर लाइक्स मोटिवेट्स मी टू कम लाइव फॉर यू exams and grades are temporary but knowledge is permanent exams and grades are temporary but knowledge is permanent तो कहा को फोकस करिबा एग्जाम आउ ग्रेड को ना नॉलेज को टेम्पररी जिंस को ना परमानेंट जिंस को तो तुम माने ही डिसाइड करियो जे कहा को फोकस करिबा थैंक यू एवरीवन फॉर योर एक्टिव पार्टिसिपेशन मैं करदेवी जहाँद्वारा तुम मैंने स्क्रीनशॉट नहीं पार एवं स्टाटस भी दे पार जस्ट ए सेकेंड यस हाँ तो ये हो गला एग्जाम्स एंड ग्रेड्स आर टेम्पररी बट नॉलेज इज परमानेंट थैंक यू या लाइफ रे इम्प्लीमेंट कर सो दैट निश्चित नुआ नुआ जिन शिखिपार नुआ जिन शिखार आग्रह डेभलप हो पार केवल एग्जाम्स को फोकस करके आम लर्न करवानी किंबा केवल ग्रेड्स को आम देखवानी Thank you everyone for your active participation. Subscribe and hit bell icon. Like, comment and share करिवा को भूलिबानी. Thank you very much friends. Have a great day. Keep learning, keep joining. And 500 series जो माने सारी नता को सारीबो. आमे आजी 325 क्वेश्चन रे पहुंची गले 1000 सीरीज रो. समस्ते प्रीवियस पार्ट्स मध्य देखिबो जो माने टेलीग्राम रे जॉइन करना सेम नेम एक्सप्लोरिंग गोल्स रे ही हमरो टेलीग्राम चैनल अछि निश्चित जॉइन करनबो. Thank you very much. Keep learning. Jai Jagannath.